Chapter 5, Audit of Items of FS from Audit. इंटेंजिबल एसेट। तो इंटेंजिबल एसेट एक आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट है जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, हेल्प फॉर यूज़ करी जाती है प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, या रेंटल पर्पसेस, रेंटल टू अदर्स के लिए, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए। तो आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट without physical substance, help for use in the production or supply of goods or services for rental to others or for administrative purposes. So, enterprise जो frequently spend करती है resources, frequently spend resources on the acquisition, development, maintenance and enhancement of intangible asset. Frequently spend करती है resources on acquisition के लिए, development के लिए, development, maintenance, enhancement. इंटेंजिबल एसेट की जैसे कि साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज, डिज़ाइन या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रोसेसेस और सिस्टम्स, लाइसेंसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मार्केट नॉलेज एंड ट्रेडमार्क्स इंक्लूडिंग ब्रांड नेम्स एंड पब्लिशिंग टाइटल्स। तो जैसे कि साइंटिफिक या टेक्निकल नॉलेज पे, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन पे न्यू प्रोसेस के या सिस्टम के, लाइसेंसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मार्केट की नॉलेज और ट्रेडमार्क्स इंक्लूडिंग ब्रांड नेम्स एंड पब्लिशिंग टाइटल्स। तो कॉमन एग्जांपल्स ऑफ आइटम्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, मोशन पिक्चर फिल्म्स, कस्टमर लिस्ट, मॉर्गेज सर्विसिंग राइट्स, फिशिंग लाइसेंस, इंपोर्ट क्वाटास, फ्रेंचाइज, कस्टमर और सप्लायर रिलेशनशिप, कस्टमर लॉयल्टी, मार्केट शेयर, मार्केटिंग राइट्स। गुडविल एक अनदर एग्जांपल है इंटेंजिबल एसेट का विच इज द अराइजेस ऑन एक्विजिशन और मे बी इंटरनली जनरेटेड. Not all the items described in above paragraph will meet the definition of intangible asset, that is, identifiability, control over a resource, and expectation of future economic benefits flowing to the enterprise. If an item covered by this standard does not meet the definition of an intangible asset, expenditure to acquire it or generate it internally is recognized as an expense when it is incurred. AS 26 के हिसाब से इंटेंजिबल एसेट, इंटरनली जनरेटेड गुडविल जो है, हम उसको एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करते. अब सब इंटेंजिबल एसेट जो है मे बी कंटेन्ड इन फॉर्म ऑफ फिजिकल सब्सटेंस, जैसे कि कॉम्पैक्ट डिस्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के केस में, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, फिल्म इन केस ऑफ द मोशन पिक्चर्स. तो compact disc in case of computer software, film in case of motion pictures, and legal documentation in case of a license or patent. Legal documentation in the case of license or patent, compact disc in the case of computer software, or film in the case of motion pictures. So the cost of the physical substance containing the intangible asset is usually not significant. Accordingly, the physical substance containing an intangible asset, though tangible in nature, is commonly treated as a part of the intangible asset contained in or on it. तो ये क्या बोलते हैं कि बेसिकली जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क है, एक सॉरी फिल्म है, एक उसमें सीडी में, ठीक है, तो उस अगर उसमें कोई फिल्म नहीं होगी तो सीडी की कोई वैल्यू नहीं है, तो वैसा ही वो सिग्निफिकेंट नहीं है. तो वही दे रखा है कि फिजिकल सब्सटेंसेस जो है यूजुअली नॉट सिग्निफिकेंट. Now, in some cases, an asset may incorporate both intangible and tangible elements that are in practice inseparable. Judgment is required to assess as to which element is predominant. For example, computer software or computer old machine tool that cannot operate without its specific software is an integral part of the related hardware and is treated as fixed asset. The same applies to the operating system of a computer, where the software is not an integral part of the related hardware. Computer software is treated as intangible asset. अब below table जो है summarize करता है audit procedures को generally required to be undertaken while auditing intangible assets. अब establish करने के लिए existence of intangible fixed asset as at the period end, to establish the existence of intangible asset as at the period end. सिंस जो इंटेंजिबल एसेट आइडेंटिफाई और नॉन मॉनेटरी एसेट है जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है,
तो उसके एग्जिस्टेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए ऐसे एसेट की ऑडिटर को जो वेरीफाई करना है कि इंटेंजिबल एसेट जो है एक्टिव यूज में है, वेदर सच इंटेंजिबल एसेट इज एक्टिव यूज इन द प्रोडक्शन, वही पीएसआरए एक्टिव यूज में है पीएसआरए के इस्टेब्लिश करने के लिए एग्जिस्टेंस। फॉर वेरीफाइंग द एग्जिस्टेंस, ठीक है, intangible active use in the production supply of goods for rental to others or for administrative purpose। तो वेरीफाई करने के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि सच सॉफ्टवेयर जो एक्टिव यूज में है बाय द एंटिटी एंड फॉर द पर्पस, द ऑडिटर शुड वेरीफाई द सेल ऑफ रिलेटेड सर्विसेज गुड्स ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट इन विच सच सॉफ्टवेयर हैज बीन यूज्ड। डिजाइन या ड्राइंग्स की एक्जिस्टेंस के लिए ऑडिटर को वेरीफाई करना है प्रोडक्शन डेटा टू एस्टैब्लिश इफ सच प्रोडक्ट्स फॉर विच द डिजाइन ड्राइंग्स वर परचेज्ड are being produced and sold by the entity. Now, in case any intangible asset is not in active use, अब in case जो intangible asset है वो active use में नहीं है, तो deletion have been recorded in the books of accounts, deletion have been recorded, should have been recorded in the books of accounts, post approvals by the entity's management and amortization charge should have ceased beyond the date of deletion. अब कंप्लीटनेस के लिए ऑल एडिशन टू इंजन ड्यूरिंग द पीरियड एंड रिकॉर्डेड, ठीक है। तो वेरीफाई करो मूवमेंट इंटेंजिबल एसेट के शेड्यूल में, जैसे कि ओपनिंग प्लस एडिशंस माइनस डिलीशंस, और क्लोजिंग बैलेंस को टैली करो एंटिटी के बुक ऑफ अकाउंट से, चेक करो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इंटेंजिबल एसेट शेड्यूल, फिर एडिशंस जो सारे मटेरियल एडिशंस है वो, डिलीशंस में कि क्या हमने डिलीट किया उसका रीज़न क्या है, रैशनली किस रैशनली और रीज़न पे किया था, ये सब। तो वेरीफाई करो मूवमेंट इन इंटेंजिबल एसेट शेड्यूल, एसेट क्लास वाइज लाइक सॉफ्टवेयर डिजाइन ड्राइंग गुडविल एक्सेट्रा कंप्लाइड बाय द मैनेजमेंट, दैट इज ओपनिंग बैलेंसेस प्लस एडिशन माइनस डिलीशन इज इक्वल्स टू क्लोजिंग बैलेंस, टैली करो क्लोजिंग बैलेंस को बुक्स ऑफ अकाउंट से एंटिटी के, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द मूवमेंट इन इंटेंजिबल एसेट शेड्यूल। फिर for additions during the period under audit, for additions during the period under audit, for additions during the period under audit, obtain करो list of all additions from the management, ठीक है। For additions during the period under audit, obtain करो a list of all additions from the management and undertake the following procedures। तो additions during the period under audit, ऑब्टेन करो लिस्ट ऑफ ऑल एडिशंस फ्रॉम द मैनेजमेंट, जैसे कि मटेरियल एडिशंस, वेरीफाई वेदर सच एक्सपेंडिचर जो है मीट करता है क्राइटेरियन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट एस एस 26। एंश्योर करना कि नो इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम रिसर्च और फ्रॉम द रिसर्च फेज ऑफ एन इंटीग्रल प्रोजेक्ट इंटरनल प्रोजेक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज, नो इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम रिसर्च शुड बी रिकॉग्नाइज, ठीक है। रिसर्च से जो भी इंटेंजिबल एसेट अराइज हो रही है हमें उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना है। एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एक्सपेंस एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज होना चाहिए। चेक करो सर्टिफिकेट और रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन बाय द एंटिटी टू वेरीफाई द डेट ऑफ यूज ऑफ द इंटेंजिबल एसेट विच कुड बी लिंक टू द
Date of commencement of commercial production, economic use to the entity for all additions to intangible asset during the period under audit. तो चेक करो सर्टिफिकेट या रिपोर्ट या कोई सिमिलर डॉक्यूमेंटेशन जो मेंटेन्ड है बाय द एंटिटी वेरीफाई करने के लिए द डेट ऑफ यूज ऑफ द इंटेंजिबल एसेट which could be linked to the date of commencement of commercial production or like economic use to the entity, all additions to intangible asset during the period under audit. तो वेरीफाई करना कि वेदर जो एडिशंस जो है वो अप्रूव्ड है अप्रोप्रिएट एंटी के पर्सनल से, फिर वेदर प्रॉपर इंटरनल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स लाइक इनवाइटिंग कॉम्पिटिटिव कोटेशंस, प्रॉपर टेंडर्स जो है फॉलोड प्रायर टू फाइनलाइजिंग द वेंडर फॉर प्रोक्योरिंग द आइटम ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स बाय टेस्टिंग दोज डॉक्यूमेंट्स ऑन अ सैम्पल बेसिस, वेरीफाई करना कि प्रॉपर इंटरनल प्रोसेस और प्रोसीजर्स जो है like inventing competitive quotations, proper tenders were followed है prior to finalizing the vendor for procuring item of intangible asset by testing those documents on a sample basis. अब डिलीशन के केस में अंडरस्टैंड करना फ्रॉम द मैनेजमेंट द रीजन एंड रैशनली, reason and rationally for deletion and the manner of disposal. Okay. Understandable reason and national obtain करो management से approval and disposal note authorizing disposal of the asset from its active use. Obtain करो management से approval or disposal note authorizing disposal of the assets from its active use. Verify करो process followed for sale of discarded asset. Example inviting competitive. Now valuation. Intangible assets have been valued appropriately as per generally accepted accounting policies and practices. तो the value of intangible assets जो है diminish हो जाएगा due to effects of time, use और obsolescence. तो value of intangible assets may diminish due to effects of time, use और obsolescence. तो diminution of the value represent करता है cost to the entity for earning revenue during a given period. तो diminution of the value represents cost to the entity for earning revenue during a given period. The diminution of the value represents cost to the entity for earning revenue during a given period, cost to the entity for earning revenue during a given period. The diminution of the value represents cost to the entity for earning revenue during a given period. Unless this cost is in the form of amortization, it starts to the accounts. Profit and loss जो है correctly ascertain नहीं हुए and the values of intangibles should be shown at higher amounts. वेरीफाई करना कि जो एंटिटी है उसने चार्ज किया अमोर्टाइजेशन को सारे इंटेंजिबल एसेट्स पे। वेरीफाई करना कि जो अमोर्टाइजेशन मेथड है यूज रिफ्लेक्ट करता है पैटर्न इन विच द एसेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड बाय द एंटिटी।
ऑडिटर को वेरीफाई करने की जो मैनेजमेंट ने है ना इम्पेयरमेंट असेसमेंट किया है, द ऑडिटर शुड आल्सो वेरीफाई वेदर द मैनेजमेंट हैज डन एन इम्पेयरमेंट असेसमेंट to determine whether an intangible asset is impaired. To determine whether an intangible asset is impaired, though the auditor should also verify whether the management has done an impairment assessment to determine whether an intangible asset is impaired. फॉर दिस पर्पस ऑडिटर को जो है वेरीफाई करना है कि एंटिटी ने जो है अप्लाई किया है S28 impairment of assets for determining the manner of reviewing the carrying amount of its intangible asset, determine करते हुए recoverable amount of the asset to determine impairment loss if any. अब rights and obligation, तो entity has valid legal ownership rights over the intangible assets claimed to be held by the entity and recorded in the financial statements. परफॉर्म करने टेस्टिंग ऑफ एडिशन शुड ऑल्सो वेरीफाई द ऑल एक्सपेंसेस और कॉन्ट्रैक्ट्स जो है इन द नेम ऑफ द एंटिटी जो एंटरलाइज है द लीगल टाइटल, ठीक है। अब रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स कौन से हैं फॉर इंटेंजिबल एसेट्स हैव बीन अप्रोप्रिएटली मेड, तो रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स फॉर इंटेंजिबल एसेट्स हैव बीन अप्रोप्रिएटली मेड, तो इंश्योर करना द फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स एज रिक्वायर्ड अंडर शेड्यूल 3 पार्ट 1 टू द कंपनीज एक्ट। क्लास इंटेंजिबल एसेट के अंदर हेडिंग होनी चाहिए क्लास, मतलब हेडिंग इंटेंजिबल अंडर एसेट के अंदर हम क्लासिफिकेशन करेंगे गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मास्ट हेड्स एंड पब्लिशिंग टाइटल्स, माइनिंग राइट्स, तो गुडविल, ब्रांड ऑब्लिक ट्रेडमार्क्स, गुडविल, ब्रांड ऑब्लिक ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मास्ट हेड्स एंड पब्लिशिंग आइटम्स, माइनिंग राइट्स, कॉपी राइट्स एंड पेटेंट्स, other intellectual property rights, servicing property rights, recipes, formulae, models, design and prototypes, and license and franchise or others. Or if you reconciliation, gross or net carrying amounts of each class of assets, reconciliation, gross or and net amounts of each class of assets at the beginning and end of the reporting period, show करते हुए additions, disposal, acquisition through business combinations, अमाउंट ऑफ चेंज ड्यू टू रिवैल्यूएशन, अगर चेंज 10% और मोर है इन द एग्रीगेट ऑफ द नेट कैरियर तो अदर एडजस्टमेंट एंड रिलेटेड डेप्रिसिएशन इम्पेयरमेंट लॉसेस शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। अब जहाँ सम्स जो है रिटर्न ऑफ है ऑन अ रिडक्शन ऑफ कैपिटल और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, every balance sheet subsequent to date of such write-off or addition shall show the reduced or increased figures as applicable and shall by a way of note also show the amount of the reduction or increase as applicable with the date thereof for the first five subsequent to the date of such reduction or increase to be disclosed as additional रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, तो अंडर डेवलपमेंट है उसके लिए एजिंग शेड्यूल जो है गिवन वो बनाएंगे हम, तो ये एजिंग शेड्यूल है। अंडर डेवलपमेंट लेस देन 1 ईयर 1 to 2, 2 to 3 एंड मोर देन 3 फिर प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस एंड प्रोजेक्ट्स टेम्पररी सस्पेंडेड। जिसका कंप्लीशन ओवरड्यू हो या फिर कॉज टू एक्सीड क्या कर गया हो एज कम्पेयर टू इट्स ओरिजिनल प्लान, तो फॉलोइंग वही सेम मोर देन 3 ईयर प्रोजेक्ट 1 और फिर 2।